हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप एमएनसी लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ के बारे में। टीसीएस प्लान्स टू डबल एम्प्लॉय सैलरी, रोलिंग आउट 44,000 जॉब ऑफर, 100% वेरिएबल पे चेक और डिटेल्स एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। एंड ऑल्सो विल गोइंग टू डिस्कस आईटी एम्प्लॉय इन बेंच फॉर कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आर इन बिग ट्रबल, लीडिंग कंपनीज पोस्टेड देयर पुअर क्वालिटी रिजल्ट लास्ट वीक। तो फिर यहाँ पर आप लोग इस आर्टिकल चाहो तो फिर वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पर कंप्लीट में डिटेल्स में मेंशन किया गया है इस आर्टिकल को जो मैंने बताया आपको। इंडियन आईटी आर्टिसन विल फिल्म टीसीएस इन्फॉर्मेशन पोस्टेड पुअर क्वालिटी रिजल्ट लास्ट वीक थ्रू दिस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी आर कमिंग टू लाइट वन आफ्टर अनदर. The main problem is in this is over staffing and underutilization of staff in leading IT service companies. Infosys Chief Financial Officer Neelam Roy, speaking recently after releasing the quarterly results, said the demand for employee in the IT services sector has slowed due to the lower number of new order. With this, Infosys said that the number of employee on the bench has increased to 20% of the total employee. मतलब जितने employees हैं Infosys में उनमें से 20% अभी भी bench पर है in the March quarter में जो अपडेट आया था. The utilization of existing employee in the project has decreased to 80%, and this is the also due to the decline in demand. He said. Nilana Roy, Chief Finance Officer in Infosys, said that we expect the employee utilization rate to increase gradually in the upcoming period. As in Infosys, the number of bench employees has also increased. In TCS, all right, what are bench staff? Bench employee, for those who don't know, they will be employed by the company and the company will pay them from their account, but they will not work for any active project. According to this, Infosys currently has 68,646 employees on the bench. On the bench, it will have brushes and experienced staff. This is what the Indian IT services companies are currently seeing as a major problem and cost attrition. The world largest IT service company Accenture announced a few days ago that it's planned to cut 19,000 jobs over the next 18 months. In this situation, several thousand employees of Accenture are in bench without any project at this stage. Accenture HR department has listed who has been to the bench for a long time without any project. Indian IT companies have been predicted to be affected since the day the US and Europe continued to rise interest rates due to the price hike in the IT service sector, which is a pillar of the Indian economy. But investors predicted that IT service company could offset the decline due to the excess business they received during the Corona period. At the same time, the IT company also did not reduce their growth opportunity, and with the main reason of this confidence of the investor. बता दो फ्रेंड, यहाँ पर जो देखो फ्रेंड 68,000 अभी भी इन्फोसिस में जो है बेंच पर है, सोच सकते हो. Okay, TCS plans to double employee salary and reduce pay disparity story in 5 points. और देखें फिर TCS plan to double employee salary, rolling out 44,000 job offer, variable pay check details here. Tata TCS addresses salary disparity among the employees. Milan Dasa, the Chief Human Resources Officer of the TCS, stated in the interview that the business is excited to give its employees the opportunity to upskill and double their salary. TCS, which has over 6 lakhs employees worldwide, is upskilling its own talent and holding employee to a higher standard evaluation. ओके, तो यहाँ पर बेसिकली बता दिया गया इन द इंटरव्यू और टीसीएस ऑफर अपस्किलिंग, लाइक इसमें क्या क्या ऐड किया गया है पॉइंट्स वगैरह. तो जहाँ तक मुझे पता है फ्रेंड, इसमें जो टीसीएस विंग्स वालों को ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर अपस्किलिंग योर स्किल्स एंड टू गेट अ हायर पैकेज रोल ऑल्सो. तो ज़्यादातर आई थिंक विंग्स वालों को ही मिलेगा जिसका रोल डिजिटल वाला में, उस पर ज़्यादा ऑप्शन उनके पास देखने को मिलेगा. देख सकते हो फिर यहाँ पर भी टीसीएस डबल सैलरी एम्प्लॉय, दिस इज व्हाट द कंपनी प्लान. सब कुछ आर्टिकल पब्लिश किया गया है. ओवर 90% फ्रेशर्स ऑप्ट फॉर लो सैलरी ऑप्शन सेज विप्रो ऑफिशियल. तो ये भी अपडेट से आप लोग चाहो तो फिर देख सकते हो, जो कि ऑलरेडी ये पब्लिश हो चुका था. ठीक है, कि लाइक लाइट टर्बो वालों को लाइट का पैकेज देखने को मिला था जो कि ऑलरेडी काफ़ी कम था. तो ये आर्टिकल बस उसी पब्लिश किया गया, बताया गया कि हेडकाउंट कितने था, कितने लोग. विप्रो रिकॉर्डेड डिक्लाइन 330 बीपीएस इन वॉलंटरी अट्रिशन फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, रीडिंग 14.1% क्वार्टरली अनाउंस इन द 19.2 ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस. बाकी आप लोग चाहो तो फिर आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो. ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो. आप लोगों को वीडियो में क्या करना है आप लोग कमेंट जरूर बताना. बिल्कुल में जय हिंद, जय भारत. और फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको एक और दिखा दूँ, फिर यहाँ देख सकते हो. Employee working on a project go to the bench when the client and their project. On their other hand, newly hired employee stay on bench when there aren't enough project and their employee. He said over hiring due to the pandemic and drop in demand due to the ongoing macroeconomic challenges and also some of the factors that have led to be inflation of benches at Indian IT company, expert notes. जिसमें ऑलरेडी आई थिंक आपको डिस्कस में कर चुका हूँ. ठीक है, तो मिलते स्टूडियो में. जय हिंद, जय भारत.